Good morning, my dear students. In last class, we started the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. We read that this is his autobiography and he had to do much struggle to abolish the system of apartheid. Apartheid, you remember? In last class I told you, yes, that is a policy of separating the separating the people on the basis of their complexion, means rang bhed niti. So apartheid was prevailed in South Africa, and despite being a dark-skinned person, Mandela became the first black president. He took a place to obey the rules and regulations of the constitution. Now there is a speech given by Mandela on that occasion. Today, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. Confer means to give, and liberty means freedom. Disaster is calamity or suffering. So he says, all of us are gathered here today with our presence. We are showing happiness and have a hope for this new country. We have gathered to celebrate our newborn liberty. मीन्स आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं टू सेलिब्रेट आर न्यू बॉर्न लिबर्टी. ये जो नई नई आज़ादी हमें मिली है उसकी खुशियाँ मनाने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर मीन्स अपार्थीड. जो डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था, जो डार्क स्किन्ड लोगों के प्रति जो उनका जो बिहेवियर था, ही इज़ टॉकिंग अबाउट दैट थिंग कि वी हैव सीन एन एरा ऑफ ह्यूमन डिज़ास्टर वेयर वी वर नॉट treated equally, we were exploited. और सही में it's too difficult that they had to face a lot of difficulties. They were brutalized. It was too hard for those black skinned people to tolerate all the tortures. So he says that this human disaster was going on for a long time, but now we are liberated. Now we will form a society that will be an example for others. Human beings will feel proud now. We, who were outlaws not so long ago, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. Children, outlaws means boycott. Privilege is special right, and distinguish is special. Possession means to have something. Emancipation is called freedom, and deprivation is poverty. So he says, for them, laws were not equal. They were not included in any decision making or any important thing. They means all the dark skinned people. दे से यहाँ पर उनका मीनिंग है उन सभी डार्क स्किन पीपल से जो साउथ अफ्रीका के थे जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था. एंड टुडे वी हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी. आज हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, एन ऑनर टू वेलकम द डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. फ्रॉम द साइड ऑफ ऑल द ब्लैक कम्युनिटी ही थैंक्स ऑल द इंटरनेशनल गेस्ट, all the people who had come from different countries. He says that you have become the witness of this victory for justice, for peace, and for human dignity. We got victory after fighting so long. तो ये एक जीत है एक सच्चाई की, इक्वलिटी की, आत्मसम्मान की. We have at last achieved our political emancipation.
we pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. So he's saying, finally we have got our political freedom. वो कहते हैं कि फाइनली हमें अब एक पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गई है. We take a vow now to keep our people free from all the bondage of poverty, suffering, discrimination, gender and deprivation. तो वो कहते हैं कि अब से हम अपने लोगों को इन सभी चीज़ों से, इन सभी बुराइयों से दूर रखेंगे. एज पावर्टी से, पीड़ाओं से, भेदभाव से, वंचन, जो भी कुछ था, इस तरह की चीज़ें थी, सभी सब हम फ्री रखेंगे. यानी कि अब से जो ब्लैक स्किन्ड पीपल थे, दे आर नॉट गोइंग टू फेस ऑल दीज थिंग्स एट ऑल. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. So children, he further says that from now this land will not feel oppression of one person by another. Equal opportunities will be there. तो चिल्ड्रन, ये एक ऐसे दौर से गुजरे थे कि ही न्यू कि व्हाट इज़ पेन, कि वो ये जो पेन होता है अपार्थाइड का, किस तरह का होता है, किस तरह, कौन सी फीलिंग आती हैं जब उनके साथ इस तरह का बिहेव किया जाता है, ऐसा बर्ताव किया जाता है. अपार्थाइड क्या होता है, यू कैन अंडरस्टैंड चिल्ड्रन कि इतना बुरा बिहेवियर कि ब्लैक वाइट दोनों के लिए अलग अलग एंट्रीज होती थी. उन्हें हर राइट से, अधिकार से अलग रखा जाता था. He says that the sun of this beautiful land will not set. What does he mean by sun? By sun he means the freedom. Son of freedom, the son of liberty, the son of right, the son of peace and justice. He says कि ये फ्रीडम चलती ही रहनी चाहिए, ये अब कभी रुकेगी नहीं. यानी कि ये जो उजाला हुआ है अब ये कभी कम होने वाला नहीं है, कभी दबने वाला नहीं है. God bless Africa. So here we come to know by his speech that what kind of love and feelings he had for his people. तो चिल्ड्रन, ये उनकी स्पीच से कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं जो उन्होंने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी हुई हैं. एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट लाइंस. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. Some difficult words are here, children. The first word is spectacular. It means very impressive. Array is collection of anything. Pinpoint here means extremely fine. Precision is clear. Demonstration is example. Bedeck is decorate. Chevron means badge. But here it means V shape.
So he says, after finishing my speech, all of us looked towards the sky in surprise, and there we saw South African jets, helicopters, and troops over the Union Building. चिल्ड्रन, हैव यू सीन परेड? कभी आपने बेटा 26 जनवरी की परेड देखी होगी, टीवी पर भी देखी होगी, तो आपको ध्यान होगा कि नेवी, एयरफोर्स, आर्मी ऑल शो द वैलियर, सभी अपना एक सैल्यूट करते हैं इस तरह से. अब ये जो प्लेन्स उड़ान भर रहे थे, दे वर नॉट शोइंग देयर परफेक्ट फॉर्मेशन. ये चीज़ें यहाँ पर एक अपना डिसिप्लिन या फॉर्मेशन नहीं शो कर रही थी, वहाँ पर वो अपना एक न्यू गवर्नमेंट के प्रति अपनी एक लॉयल्टी शो कर रहे थे, जो कि अभी फेयरली इलेक्टेड हुई थी, यानी कि जो अभी लोगों के द्वारा चुनी गई थी. तो ही मेंशंस द फैक्ट हियर दैट द आर्मी चीफ्स who are saluting me today, before few years they would have arrested me just because that apartheid system. Finally, a jet of Impala passed from there, leaving the impression of African flag in black, red, green, blue and golden color. तो लाइक दिस अफ्रीका के, इस तरह से अफ्रीका के फ्लैग की एक इमेज आसमान में बन गई थी. सो माय डियर चिल्ड्रन, यू कैन imagine very well that what was a grand sight. It was a very grand sight, definitely. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel, Africa, and black singing Die Stam, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. Here he says, that day people sang two national anthems. Actually, white Africans sang a different anthem and the dark African sang different one. तो दो वाइट पीपल थे, उन लोगों ने गाया निकोसी सेकलेल अफ्रीका एंड ब्लैक सैंग डाई स्टैम. सो डाई स्टैम वाज द ओल्ड वन एंथम, मीन्स डाई स्टैम अफ्रीका का सबसे पुराना एंथम था, ये पहले बनाया गया था. तो ब्लैक अफ्रीकन वर स्टिल अटैच्ड विद द रूट्स ऑफ अफ्रीका. वी कैन सी हियर, हम देख सकते हैं कि जो पुराना एंथम था वो अफ्रीका के जो डार्क स्किन पीपल थे उन लोगों ने वो गाया, उनको अभी भी उसको अपने साथ रखा हुआ था, उसी को वो गा रहे थे. इट इज़ शोइंग हियर कि नन ऑफ द ग्रुप न्यू द मीनिंग ऑफ अदर्स एंथम. किसी भी ग्रुप को, किसी दोनों ग्रुप्स में से एक दूसरे के ग्रुप का एंथम का मीनिंग किसी को नहीं पता था, but still they accepted and kept those words in their heart. फिर भी उन्होंने उन शब्दों को एक्सेप्ट किया और उनका रिस्पेक्ट किया.